So, as sir have already discussed that I have cleared UPSC in 2022, and I have also appeared for rank improvement this year. So, I would be sharing commerce strategy for 2025 mains. Primarily, I won't be discussing you guys very generic information which is needed for commerce and accountancy. Rather, I think you guys have prepared already a little bit, or you are in the know how the structure of the commerce paper is, what type of questions are being asked, and you are well versed with the syllabus and all. So I want to emphasize upon what strategy you could have adopted for the commerce for means 2025. Let's start with the session. Yeah, sorry to interrupt, but I would really emphasize कि he has actually appeared. शिवांग जो है उन्होंने अभी एग्जाम दिया है मींस 24 का. So I think he is very well aware that what challenges a aspirant faces in the commerce. Because आप एक चीज समझिए कि अगर कोई already qualified person optional के साथ appear करते हैं तो he is actually trying for the best marks in the optional, है ना. तो उनका जो first hand experience है मेंस 24 का he will also share from there कुछ क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे. And that is what makes this session very fruitful कि आपको 2022 में एग्जाम क्वालिफाई किया लेकिन फिर से 24 में जो एग्जाम दिया है उसके एक्सपीरियंस से भी आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है. सो प्लीज लिसन इट वेरी केयरफुली. या थैंक यू शिवांग, प्लीज कंटिन्यू. Okay. So yeah, to add sir's point, I would like to say that in the initial attempts, what mistakes I have done, so I have rectified those mistakes in the year in which I got selected. But since I have worked for rank improvement, therefore I work on the basic value addition for commerce optional. Because for to get double digit rank, it's a very challenging task. Therefore, I literally work so hard in the optional so that I don't miss any loopholes in those optional, which I missed when I got selected. So yeah, I will be discussing those things, and I will be discussing a bit about the kind of question that is being asked in 2024 and how we can add one or two more marks than the general average marks which one got in the optional. So is everyone comfortable in English, or I should be more bilingual? You may reply on the comment section or in the chat box. Yeah, actually, I'm getting a message. I don't know whether you are getting it or not. People are comfortable in English because there are some people who are not aware about Hindi. So you can use some word of find the English. So I would like to say why you should focus on optional from now onwards. Since you guys are preparing for means 2025, or you have to appear for UPSC 2025, which is about to happen in May 2025, right? So you have around 200 days, let's say the entire month of November, the month of December, and bit let's say 10-12 days of the month of October, and around 1 or 1.5 months of 2025 to focus on means related proportion of preparation. Okay, so I would say कि you have January, you have half February, you have December complete, you have November, then you have a bit portion of October. So I would say you have around 120 to 140 days depending on the preparation of your prelims part. So why it is important to focus from optional from now onwards is because of the simple reason optional will determine whether you are going to be in the list. Optional is going to determine which service you will be getting, and optional is going to determine ultimately the selection of yours. Since we are having a technical optional, therefore it is mandatory for us to prepare an optional in a way that we do not lose any loopholes from now. Everyone is going to get a bit panicked about prelims portion from January to February onwards. But this is the high time you need to focus on optional, because from between the portion of prelims or mains which may you have very limited time, let's say around 80 days of prelims and mains. You don't have literally time to prepare all optional well. You just have time in those areas to revise the optional. So why it is necessary to focus on optional is
you can consolidate your optional, you can focus on note making, you can focus on previous year question. Apart from it, uh, yeah, that's right. And apart from it, you can make it more value added content you can add on in your preparation from now onwards. So I will be discussing what you can do, how you can do, but it is important for you people to understand and to not neglect this optional portion from now. Because what happens largely, I've seen among a lot of aspirants and with my friends also, they tends to ignore optional as the time progress. They rather focus on the GS or they focus on prelims portion from initial, let's say November, December only. But I would say give you a counterintuitive information. The reason being, until or unless you're well prepared for means, you won't be giving your prelims with much more confidence. Point number one. Point number two, even if you have cleared prelims, you won't be able to clear means with a flying color. Even if you clear the cutoff, you won't be in the final list. Therefore, it is the high time for you guys to prepare optional in letter and spirit. And I will tell you how many hours you can devote for optional, how many, what should be your routine ideally, and that should be depending on the person to person. That varies. That is not something which is of hard and fast rule. Okay, so this is why you need to prepare for the optional. Now, let's talk about the how we can allocate time for optional. I would give you a very simple idea. I don't want to make things that I want to impose certain things on you. See, everyone have as of now a different standing based on their reading habits, based on how much syllabus they have completed and how much writing practice they have done. So it varies from person to person. How many are I am old students of Smriti Rani, I will come to your question afterwards. I will take the queries. Don't worry about it. I will reply to all the answers, all the questions, and just wait for some time. Yes. So when I'm saying it is a customized plan for everyone based on the level of standing they're having. So if you have well versed, if you have read the syllabus once or you have given previous attempts, that means you already know the foundations of the syllabus. So you need to revise the optional paper. Point number one, you need to practice numericals. Point number two, and point number three, you need to focus on the value addition aspects. Okay, and the person who has just completed the optional, for them it is important to practice, to consolidate, to make notes, and to do value addition. For the people who have limited knowledge of optional or who are just in the beginning or in the initial phases, I would advise them, it is important for you to read optional undoubtedly, but you have to devote more time to the optional. You can't devote equal time to your GS because until unless your optional gets completed, there's no point of going to prelims with an half-baked optional. Okay? Then don't worry, you have enough time. I don't want you guys to make panic or to get in a state of confusion simply because आप आराम से करेंगे ना तो you have enough time कि अभी optional अच्छे से complete हो जाए. I'm not saying just complete होगा, अच्छे से complete होगा. And for that, I would say कि if someone is putting, let's say, 10 hours a day, someone is putting 8 hours a day, depending on the time, you devote percentage of your time for your optional. Let's say if you are reading 10 hours of 6 hours of day or 8 hours of day, you can devote half of the time for optional in the initial phase so that it got consolidated initially. In the later phase, let's say from the month of January or December end, आप उसको कम कर सकते हो. You can do 3 hours a day or 2 hours a day for optional. ठीक है अभी बट अगर आपका बहुत सारा पोर्शन बचा है तो यू कैन प्रिपेयर ऑप्शनल विथ फुल स्पिरिट. आप थोड़ा ज्यादा टाइम दे सकते हो बिकॉज आई वांट टू से यू वन थिंग वेरी क्रिटिकल इनपुट. यू मे नोट इट डाउन. देयर इज नो limitations and boundaries for GS portion, whether it is mains, whether it is prelims. Because if we read the current affairs, it got increased day by day. So what happens when you flow with the GS portion? You will be in a never-ending loop. You will be in the vicious cycle of its own syllabus or own technicalities, and you miss the portion which is a low-hanging fruit.
Because if you look at the questions of previous years and other aspects, you may find the optional paper has more or less the static question. The question 80 to 70% paper is more of the static nature. You can predict the questions based on your analysis in the previous year questions. You can even got the kind of question they are going to ask, the kind of themes that they're going to ask got repeated every year or so. But that is not the case with GS. So GS has a very vast domain which needs to be covered simultaneously, gradually. It should not be like you just focusing on optional and ignoring GS, but you have to prioritize optional for the time being. And I would say it is advisable for you to practice it on a daily basis, weekly basis, or monthly basis. Not monthly, so, but on a regular basis, depending on the schedule that you have made for yourself. I do not advise anyone to compromise GS, but I advise people to prioritize optional for certain period of time, because during let's say from the February onwards or the March onwards, you will be completely focusing on prelims. So that time your polity portion, your static history, geography, and your economy portion automatically gets revised. But let's say when you left your optional in the month of February, you won't be able to revise those optional for the next couple of 3 months. Okay? Then you will be in the month of June and you have not revised something or you have not read something. That is a very problematic situation, because in optional you have the chances of scoring even 140 to 150 marks in a particular paper, and no GS paper gives you that leverage. Sometimes ethics can give you leverage, but not obvious reasons. आजकल नहीं दे रहा है. ठीक है, so optional में you have the chances of scoring 260 to 300 anywhere in between, but for GS the average range is 100 to 120 largely. Therefore, it is advisable to focus on optional, because once it is consolidated, you can good to go. Yeah, Smriti, I will address your question in the subsequent slide. Uh, uh, since you are an old student and you have to revise the things, I will tell you how you can revise it well. And yes, it is quite possible to revise it now with answer writing. There is no issue in that, and I would say it to you with full conviction that it is very wise to yeah, it is very wise to prepare optional and practice it via answer writing also, because the kind of questions that is going to be asked got repeated, so it's a very thematic based answer writing practice, which we will discuss. So I think so far you have cleared about you are able to got the essence of it. Now let's understand how you can prepare and revise the questions and handling PYQs. I would say you one thing, that for me, PYQs is something which is the core asset for any examination. We understand the meaning of asset, right? So for previous year, for optional paper especially, you will see direct PYQs without even changing the wordings, without even changing the commas or question mark. The question got repeated, because the nature of the optional paper of us is such that it is more or less largely a static portion. Okay, so it is very important for us to handle PYQs in a way that if the question got repeated, we get +1 or +2 more marks than an average answer would fetch. And how would you got those PYQs? So more marks, one, by analyzing PYQs well, by understanding and brainstorming PYQs well, thirdly, by practicing those PYQs. सबसे पहले एनालाइज करना है कि PYQs में क्वेश्चन किस तरीके के पूछे गए हैं. Rashid, I will answer your questions. Wait a minute. सबसे पहले PYQs को एनालाइज कैसे करना है, then how you can practice those PYQs. There's a called workbook of PYQs. You can refer to that, and apart from it, you can brainstorm on the PYQs. Numerical portion maybe you can do the PYQs, and even in this year 2024,
one or two questions got repeated directly from the PYQs. I will show you in the subsequent slide which question got repeated. I think the question of cost accounting, which is the question of work in progress, got repeated directly just by चेंजिंग द डिजिट्स, और चेंज नहीं किया था डिजिट्स को भी, वो भी हाफ कर दिया गया था डिजिट्स को, या फिर डबल किया गया था. सो दिस इज हाउ द PYQ गॉट रिपीटेड. इवन इन द क्वेश्चंस ऑफ फाइनल अकाउंटिंग जो फुल फ्लैज क्वेश्चन आता है, there's a question called question in 2014 which got repeated in 2018. That question also come in subsequent years. So 3 times single questions got repeated in PYQ. Even in the portions of general entry वाला जो क्वेश्चन होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, सेम क्वेश्चन गॉट रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स. ठीक है. सो अंडरस्टैंड दोस थिंग्स. न्यूमेरिकल में PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड PYQ हेल्प यू not to deviate from the core preparation. So you have limited time, you have lot of resources, but you have limited energies also. So you can't do everything under the sun because your optional is very wide. Therefore, it is advisable to concentrate your energies around or in around PYQs. क्योंकि in UPSC generally the question 80% 70% questions are going to be asked from there. बाकी 20-30% है वो आपका प्रैक्टिस से, वो आपकी नॉलेज बेस से, वो आपके टेस्ट सीरीज से रिजॉल्व हो जाए. ठीक है. चलिए लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रेटेजी फॉर रिवीजन. ठीक है. नाउ हाउ यू आर एबल, यू कैन रिवाइज. दिस इज द क्वेश्चन दैट इज बीन आस्क्ड बाय स्मृति एंड आई थिंक राशिदा का भी कोई क्वेश्चन था. हाउ टू इवैल्यूएट आंसर कॉपीज. सी नाउ लेट्स, आई एम अज्यूमिंग दैट आपको चीजें पता है, आप कैसे रिवाइज कर सकते हो. देखो, there are a lot of ways to do revisions. I will advise you couple of ways. You have to you don't have to restrict to one ways. You have to adopt multiple ways at multiple point of time. There is no hard and fast rule, but देखो टाइम के हिसाब से आपको चीजें चेंज करनी पड़ती हैं. जब जरूरत होगी तो आप शॉर्ट नोट से रिवाइज करोगे, कभी आप PYQ करोगे, कभी आप टेस्ट सीरीज करोगे. Now what do you mean by I mean by short notes and why they are so important for optional. देखो, especially in paper 2 we have around 40 chapters including OT, OB, HRM and IR. उन 40 chapters में let's say you have 200 pages की book है and you have very limited time between the mains paper, you have very limited time between pre and mains, so you don't have the time and energy to go through all the things. Therefore, once you read something, once you understood something, make the short notes of any topic and of any chapter. And those short notes should be such that the coverage need to be there, the value addition needs to be there, and it is good for revision also. This should not be too bulky. This should be very concise. कि अगर आप उसको एग्जाम से पहले रिवाइज कर पाओ अच्छे से और चीजें आपको रिकॉल हो जाए, तो आप उस तरीके से कर सकते. देखिए, अगर आपने बनाए हैं तो इट इज वेरी गुड. इफ यू हैव नॉट मेड इट तो यू कैन रेफर टू द रेडीमेड शॉर्ट नोट्स. ठीक है. देन आता है आपका PYQ के थ्रू कैसे रिवाइज. अपने आप लेट्स से आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, लेट्स से यू हैव रेड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर. सो यू हैव रेड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, फंक्शंस, इंपॉर्टेंस, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर. आई विल कम टू योर पॉइंट अक्षिता, वेट अ मिनट. ठीक है. डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, बिल्डिंग दिस. नाउ गो थ्रू द PYQs. Go through the PYQs and look at the type of question that has been asked. Let's say the question is of 2-3 lines. Question आया है, अब आपको देखना है इसमें क्या चीज लिखनी है. Think about it. Think about it. What the question is asking. Then think whether you have the content of that or not. One thing is this. Then you should try to attempt those PYQs and write it down. Now, if you have done those things, now you think of the value addition. How I can increase the marks which I could have gotten. Let's say I have written something, I got 10 marks out of 20. Now there is a scope of 1 or 2 marks or 3 marks more in the question. What I can done? I can done through value addition. Let's say I can use a quotation for that. Culture के बारे में अच्छी लिखनी. Let's say Bill Gates, there is a quotation that
You can take anything from me, but my organization culture is something which you can't take from innovative culture of Microsoft, or let's say Apple का कुछ quotes. I have specifically focused on a lot of quotes this time because of the simple reason. I think if I use a quote in particularly 50-60% of the questions, I may get 1 or 2 more marks. Then you can use bit of diagrams, micro diagrams. You can use value-added conclusion. You can use examples to substantiate your points. Like what you do in GS nowadays, you write a point, then you substantiate it through an example. It gives concreteness to an answer. Similarly, you have to do an optional. अब organization culture है तो look at different organization, look at the type of cultures they are having, look at the different kind of leadership modules they are having, how they build the culture, what type of culture is prevailing in edtechs, big fours या फिर आपका गवर्नमेंट सेक्टर में कैसी है, इनोवेटिव कंपनीज में कैसी है, जैसे एप्पल गूगल ये टेस्ला वगैरह हो गए. ठीक है. देन यू कैन गो अहेड विद द टेस्ट सीरीज. आई वुड से कि आप फुल एंड टेस्ट भी लेने हैं आपको, और आपको डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है. रीजन बीइंग कि डेली का मतलब ये नहीं होता आप रोज रोज लिख रहे हो. डेली का मतलब होता है अपने हिसाब से आप वीक में 2 बार भी लिख सकते हो. बट समझ रहे हैं आपका, आप चैप्टर प्रिपेयर करो, उसके बाद उसका आंसर अडॉप्ट करो. ठीक है. सो डोंट थिंक कि आई हैव टू डू इट डेली तो मेरे को बहुत मेंटल टोल होगा. नो, आप वीकली अटेम्प्ट करो, बट ये नहीं होना चाहिए कि आप वीक में एक क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर रहे हो. डेली का मतलब ये होता है आप 2-3 क्वेश्चन डेली कर लो. नहीं कर पा रहे तो वीक में आप 10-12-15 क्वेश्चन कर लो. ठीक है. तो when you are revising things, you I think you got the essence that I want to say. एक तो फंडामेंटल से स्ट्रॉन्ग करने हैं, उसके बाद आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी जब आ जाएगी, देन यू हैव टू बिल्ड अपॉन दोस कंसेप्चुअल क्लैरिटी. क्योंकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी से आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, 50% मार्क्स, 125-30 नंबर है. उसके ऊपर जाना है तो आपको वैल्यू ऐड करना ही पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन इज सच दैट. I think I make the point clear to everyone. Is it fine? Is it fine? Can someone please reply? Okay, 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 okay. Yes, Rashida, I would say, see, look at the previous year questions and try to look at how many theory questions you can attempt, how many numerical questions you attempt. First and fifth question is compulsory, so definitely you have to attempt 100 marks for theory. There's no doubt about it. Now, out of 125 marks, there will be 6 questions. You have to attempt 3 questions. Now you can trade off whether you want to attempt theory, whether you want to attempt numericals. But having said that, this is not something priority to numerical or theory. You have to attempt both the things. देखो 3-4 न्यूमेरिकल के क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे. I will tell you, Smriti, where you can start for value addition. 3-4 न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस तो करने ही पड़ेंगे, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. If you are able to find the substitute, please let me know, because since I have analyzed couple of years previous year questions, तो मुझे तो नहीं मिला, क्योंकि आपको टैक्स का करना पड़ेगा, कॉस्ट का करना पड़ेगा, तो फाइनल अकाउंट्स करना पड़ेगा. ठीक है. एफएम का आपको करना ही पड़ेगा. तो इट इज नॉट न्यूमेरिकल वर्सेस थ्योरी, इट इज ऑलवेज न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी, but it depends on your aptitude ki you are comfortable in which domain. There are certain people who have very good accuracy in numericals, so they attempt more numericals. Accuracy plus speed. There are people who are very bit averse from numericals, so they attempt more theory. But numericals तो attempt करने पड़ेंगे, उसका substitute नहीं है. We'll talk about value addition, how you can do that. I would say कि you can collect some quotes, bit of diagrams and all, और एग्जाम्पल्स आपको सोचने पड़ेंगे. थोड़ा बहुत आप पढ़ते हैं तो वहां से पढ़ेंगे. राहुल सर ऑलवेज प्रोवाइड यू सर्टेन ओबी रिलेटेड एग्जाम्पल्स या फिर करंट अफेयर्स जो होती हैं कॉमर्स की बिफोर मेंस और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इट्स सिलेबस आल्सो ही यूज्ड टू प्रोवाइड. तो यू कैन रेफर टू दोज और उससे छोटे छोटे पॉइंट्स बना सकते हो. लेट्स से आई विल टेल यू, जैसे स्टैंडर्डाइजेशन का एग्जाम्पल्स है, तो आप स्टैंडर्डाइजेशन में असेंबली मैन्युफैक्चरिंग का आसानी से आप लिख सकते हो कि हुंडई में होता है, होंडा में होता है ना, मारुति में होता है. यू कैन ऑल्सो राइट ब्लिंकिट में होता है. यू कैन ऑल्सो राइट जोमेटो में स्टैंडर्डाइजेशन है, मैकडोनल्ड्स में स्टैंडर्डाइजेशन है ना. तो ये जो न्यू एज एग्जांपल्स हैं, इफ यू राइट दोस एग्जांपल्स दैट आर गुड टू गेट मोर मार्क्स. ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का एग्जांपल है तो आप लिख सकते हो ब्यूरोक्रेसी ऑर्गेनाइजेशनल इंडिया में गवर्नमेंट सेटअप्स में.
एडहोक्रेसी ऑर्गेनाइजेशन है आपकी इनोवेटिव फर्म्स में, जैसे आपकी एडटेक स्टार्टअप्स हो गए, ठीक है, या फिर आपके ये हो गए, एप्पल हो गया, आपका गूगल हो गया। और आपकी रूल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन आपको बात करनी है तो आप स्कूल का एग्जाम्पल ले सकते हो, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का। आपको मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का पता होना है तो आप लिखते हो हॉस्पिटल चेंज में होता है। तो इस तरीके के एग्जाम्पल, दो दो एग्जाम्पल, तीन तीन एग्जाम्पल हर चीज में रखो, ठीक है। ऐसे आप इंडस्ट्रियल रिलेशंस में बात होती है तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस में यू शुड नीड टू नो कि कहाँ का स्ट्राइक्स हो रही है, कहाँ का लेबर यूनियन स्ट्रांग है, जर्मनी का कैसा है, जापान का कैसा है, ब्रिटेन का कैसा है, इसके डिटेल्स में नहीं जाना है। बस थोड़ा थोड़ा जब वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट पढ़ो तो एक बार देख लेना इधर कैसा है, बस। बहुत मतलब इट इज नॉट ए वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस, बट इट्स ए कॉन्शियस एफर्ट्स। अंडरस्टैंड दिस थिंग, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन टाइम टेकिंग प्रोसेस एंड कॉन्शियस एफर्ट्स। कॉन्शियस एफर्ट मतलब कि आपको सोचना पड़ेगा कि भाई मेरे को एग्जाम्पल चाहिए। इन टाइम टेकिंग प्रोसेस का मतलब बहुत टाइम लगता है, वो टाइम नहीं लगता, बट कॉन्शियसनेस चाहिए। Radhika, sir, please share the interpretation how much role format etc. and sir how to remember theory answer because of the time. Hmm. ठीक है, आई विल डिस्कस विद यू अभी, एक सेकेंड, लेट मी कंप्लीट द स्लाइड्स एंड विल स्टार्ट विद योर क्वेश्चंस एंड ऑल। देखो, दो चार मैं क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ आपसे मेंस 2024 के, फॉर योर रेफरेंस, जिससे आपको समझ में आए व्हाट आई एम ट्राइंग टू से फॉर द लास्ट हाफ एन आवर और सो, ठीक है। I won't be very much elaborative here because of the simple reason कि आप लोग अभी may or may not be in a mood to discuss those questions. आप लोग ऐसा सोच के आए होगे कि you will just listen and you are good to go. ठीक है, तो अभी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, उसके बाद I will tell you about things. Let's understand this question is from means 2024 and please read this question first. पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, I will elaborate. Yes. So the question is, what do you mean by model employer? Critically examine the role of public enterprise in acting as a model employer. So आपको लगेगा ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मेन स्ट्रीम टॉपिक से नहीं है। इट कैन, इज इट फाइन, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ आपको लग रहा है ऐसा कि नहीं? इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम आईआर और एचआरएम, विच एवर यू थिंक सो। फोकस ऑन द स्टडी व्हाट। यस गाइस प्लीज। हाँ, तो आपको लग सकता है कि बहुत मेन स्ट्रीम का क्वेश्चन है या नहीं है, बट आई वुड से कि इस तरीके के अप्लाइड क्वेश्चंस भी आएंगे। कभी कभी ऐसा हो सकता है आपने डायरेक्ट पढ़ रखा हो, बट अंडरस्टैंड द कोर थीम बिहाइंड दिस क्वेश्चन की व्हाट इज मेंट बाय मॉडल एम्प्लॉयर। आपको पहले वो लिखना है, फिर आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है रोल ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज एंड एक्टिंग एज ए मॉडल एम्प्लॉयर। अब आपको ये लगेगा कि पब्लिक एंटरप्राइज मींस पीएसयूज, गवर्नमेंट सेक्टर, इसका रोल क्या है, बट यू हैव टू, what I'm trying to say is that you have to address all sides and all dimensions of the question. You can't leave any side open. इसमें आपको दोनों साइड बतानी है कि पब्लिक एंटरप्राइज मॉडल एम्प्लॉयर है भी, पब्लिक एंटरप्राइज मॉडल एम्प्लॉयर नहीं भी है। एक चीज दोगे तो आधा नंबर मिलेगा। मॉडल एम्प्लॉयर की आप डेफिनेशन लिख सकते हो कि क्या होता है भाई, जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, अच्छा रेमुनरेशन दे, अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ हो, आपका वर्किंग रिलेशनशिप अच्छा हो, दिस इज मीन बाय मॉडल एम्प्लॉयर। पर अब आपको वैल्यू एडिशन करना है इस क्वेश्चन में, यू कैन कोट समथिंग, यू कैन नरेट सम एग्जांपल ऑफ मॉडल एम्प्लॉयर। लेट्स से आप अच्छा एग्जांपल लिख सकते हो, टीसीएस का एग्जांपल लिख सकते हो, आप गूगल का लिख सकते हो, आप माइक्रोसॉफ्ट का लिख सकते हो, जिसमें लेबर टर्नओवर थोड़ा कम हो। ऐसा नहीं है आप एल एन टी मॉडल एम्प्लॉयर लिख दोगे, लार्सन एंड टर्बो। आप ईवाई को मॉडल एम्प्लॉयर नहीं लिख सकते नाउडेज, ठीक है, बिग फोर में नहीं लिख सकते आप मॉडल एम्प्लॉयर। तो अंडरस्टैंड व्हाट यू आर राइटिंग, देन यू कैन ऑल्सो स्टार्टेड विद अ कोट। आप सोचो कि मॉडल एम्प्लॉयर में कोड क्या है, मतलब यू कैन राइट कि इफ यू वांट टू ट्रीट योर वर्कर वेल, दे विल गिव यू द मैक्सिमम रिटर्न। इस तरीके से आप लिख सकते हो, दिस इज मेंट बाय मॉडल एम्प्लॉयर। और यू कैन कोट, यू कैन कोट इट डाउन एंड यू कैन से who was the quoter of it, who said this thing. So there are a couple of quotes which I have collected. So सर के नोट्स भी हैं, राहुल सर के, एंड अपार्ट फ्रॉम इट आई हैव ऑल्सो
quoted from my own source. I have collected it. I will share it with you, but not now. We'll share it in some couple of days or so. ठीक है. Now you have to examine it. एग्जामिन में भी वही चीज है कि आपको पहले बताना है कि पब्लिक एंटरप्राइज कैसे है. पब्लिक एंटरप्राइज में अच्छी अच्छी बातें लिखो. देन यू हैव टू क्रिटिकली ऑल्सो एग्जामिन कि ये नहीं भी है मॉडल एम्प्लॉय. कैसे नहीं है भाई? लेबर डिस्प्यूट होता है. एग्जीक्यूट आपका मेरिट बेस्ड प्रमोशन नहीं होता है इसमें. इसमें सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन. ठीक है. इसमें आपको ग्रोथ की उतनी एवेन्यूज नहीं मिलते जितने आपको प्राइवेट सेक्टर में मिलते हैं. रिलेटिवली कंपनसेशन प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट से कम है. दैट इज व्हाई इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज मॉडल एम्प्लॉय. Then you can say that despite being all these things, model employer है नहीं है. Public enterprise has provided a lot of employment to the different people. So you can write it like this. So when I'm talking, I have took this question because you have to deal every question holistically by addressing different aspects. If you address one or two aspects, then it is not a wise answer. You may losing the marks despite knowing the content. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दीज क्वेश्चंस. अब ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, हर साल आते हैं. डिफरेंशिएट बिटवीन सेंसेशन एंड परसेप्शन. ये शायद इसी साल के क्वेश्चन है. तो इसी साल के नहीं, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन सेक्शन ए में फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन ही है ये. और ट्रांजैक्शन ट्रांसफॉर्मेशनल इक्वेशन. अब आई वुड से यू टू हैव मल्टीपल पॉइंट्स आउट ऑफ द डिफरेंसेस. देखो जनरली क्या होता है, आप 4-5 पॉइंट लिखते हो और फिर खत्म कर देते हो. पर सोचो अगर आप ज्यादा पॉइंट क्रिएट कर पाओ. पहले शायद आप डेफिनेशन लिख दो. दूसरे में आप एग्जाम्पल लिख दो. उसकी यूटिलिटी लिख दो. फिर आप लिख दो कि किसका स्कोप ज्यादा है किसका कम है. ये जो 4-5 सेट पॉइंट्स होते हैं ना, ये आप लिखो. फिर स्पेसिफिक चीजें लिखो. देन यू विल बी हैविंग ए ग्रेटर एज. Yes, you can write about women right protection. It is a very good point. You can write about gender equality. You can write about equal pay for equal work. इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इन, आप इसमें लिख सकते हो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में. दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट. मतलब यू कैन से इंक्लूसिविटी इन द मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. तो इस तरीके से आपको डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन सॉल्व करने की. बहुत आसान क्वेश्चन है. सेट फॉर्मेट है. बट नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ मार्क्स ज्यादा मिलेंगे. सिंपल लॉजिक. ठीक है. तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ना, तो इनके आप अगर आपको सीधे सीधे एग्जाम्पल्स लिख दोगे तो एक एक दो दो पॉइंट ऐसे ही बढ़ जाएगा. Now, let's talk about this question. This question is again in the let's say fourth question आया था इस बार. और क्वेश्चन बड़ा था ये थोड़ा सा. Need for integrating individual goal and organizational goal, critically examine it. Then what is the role of coordinating, ऐसे करके कुछ था क्वेश्चन. Why I have took this question? I will tell you one thing. अब आप पहले तो इसमें आपको इंट्रोडक्शन में कोई वैल्यू एडिशन लिखनी पड़ेगी. गोल्स की इंपॉर्टेंस क्या है. आप एमिटाई जो अपने थिंकर हैं एमिटाइट जोनी उनका लिख सकते हो. गोल्स आर द डेस्टिनेशन फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन टू रीच. इस तरीके से आप कुछ भी कोड लिख दो छोटा सा. बट सिंस यू हैव substantiated within organizational thinker that gives value to what you have written. Are you getting it? What मैं कुछ बोलता हूँ उसकी बात की उतना वजूद नहीं है, क्योंकि एमिटाइट जोनी ने जो बोला है उसकी बात की वैल्यू है. बिकॉज ही हैव डन लॉट ऑफ रिसर्च फॉर दिस. ठीक है. तो आप इस तरीके से इंट्रोड्यूस करो. देन you have to tell need for integrating individual goal organizational goal. That is one part. आपने बता दिया. ठीक है. नीड बता दी 3-4-5 पॉइंट. देन यू हैव टू टेल how you can integrate individual goal and organizational goal. Either if that is not been explicitly asked, you need to mention it. अगर नहीं पूछा है तब भी मेंशन करना है, क्योंकि या तो देखो नहीं पूछा है तो आप थोड़ा सा पासिंग रेफरेंस दो उसको मेंशन. ये नहीं पूरा हेडिंग बना दी. थोड़ा सा पासिंग रेफरेंस दो, वे फॉर्मेट में लिखो. क्योंकि उससे पता चलेगा ही not only understand what has been asked, he also carries a holistic understanding of a particular issue. So you can tell about mechanism for integrating individual goal and organizational goal. तो आप कैसे लिख सकते हो वही लिख सकते हो. ईडब्ल्यू ब्लेक का मॉडल लिख सकते हो. फ्यूजन अप्रोच, एमबीओ अप्रोच लिख सकते हो. इन और चीज भी लिख सकते हो. कंट्रीब्यूशन इंड्यूसमेंट मेथड लिख सकते हो. और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से. ठीक है. सो दिस इज व्हाट एक सेकंड.
where to use quotes in introduction or see, आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, दोनों जगह मत यूज करना है क्वेश्चन पे। और आई वुड से कि अगर इंट्रोडक्शन में फिट बैठ रहा है कोड तो लिख दो, नहीं तो फिट नहीं बैठ रहा तो कंक्लूजन में ट्राई कर लो। जबरदस्ती नहीं लगानी है कोई भी चीज, जहां से फ्लो बने वहां से लिखना है। यू कैन राइट चैलेंजेस इन दिस क्वेश्चन, हाँ लिख सकते हो आप चैलेंजेस, बट देखो ये चीज ना, चैलेंजेस वैलेंजेस अगर लिखना है तो बहुत स्पेसिफिक नहीं है। चैलेंजेस उसने पूछे नहीं है, नीड पूछा है बस, क्यों करना है चैलेंजेस। अगर क्रिटिकल एग्जामिन पूछा या फिर कुछ ऐसी चीज पूछी तब लिख दो, बट जो मैं बता रहा हूँ मेथड्स ऑफ इंटीग्रेटिंग ये आप लिख सकते हो क्योंकि ये इससे रिलेटेड है। चैलेंजेस एक एंटीथेसिस स्टेटमेंट है, समझ लो। मैं बोलूंगा आपको कि why you need to prepare for UPSC, need for preparation of UPSC. So you have to tell the need, then you can tell ways to prepare. That's okay. But now you are saying कि need is for UPSC is XYZ, then you are saying challenges of UPSC. तो वो मतलब अलग ही लिंक में चला जाता है। लिख सकते हो अगर ओपन एंडेड क्वेश्चन होता तो। How to generate points in paper 2, that is I will discuss you in couple of minutes, uh, because what I have think I have ठीक है स्मृति, I will discuss it how to generate points, but for the timing आप थोड़ा hold on करो। The reason being I have I'm planning with Rahul sir to have something good for you guys। ठीक है, now एक पेपर 1 का भी क्वेश्चन ले लेते हैं। डिस्कस द रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ इन फाइनेंशियल डिसीजंस। अब रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ सिंपल है, इसमें क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हो। पहली बात तो फाइनेंशियल डिसीजन में सारे डिसीजन के बारे में रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ लिखना है। फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टिंग डिसीजन, आपका वर्किंग कैपिटल डिसीजंस जो होते हैं, देन यू हैव डिविडेंड डिसीजंस, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो 4 5 डिसीजन में रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ लिखो, देन यू कैन मेक ए स्मॉल डायग्राम, यू कैन मेक ए यू कैन मेक ए स्मॉल डायग्राम रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, देन यू कैन टेल अबाउट कि जहां जहां रिस्क बढ़ रहा है वहां पे रिटर्न भी बढ़ रहा है। यू कैन टेल अबाउट वेरियस सिक्योरिटीज यहाँ पे, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इतना सा कम रिस्क है, वेंचर कैपिटल में बहुत ज्यादा रिस्क है, इक्विटी में बीच वाला रिस्क है। इस तरीके से आप मेंशन भी कर सकते हैं। So basic simple diagram, but it will fetch you very good marks. मतलब it looks very appealing कि you have an understanding about a particular topic. So I think I have made my point clear. Is it fine with everyone? Somebody please respond in the comment section. Is it fine? Yes. ठीक है. Now, please ask whatever you want to ask. Whatever you have any doubt with regarding to the session, with regarding to commerce or something else you want to ask specifically or in general. I don't want to overload you with a lot of information because that's not the purpose of the session. You can also unmute yourself, and if you want to ask it, you can ask it directly. So I think uh, I'm ending my slide, and I will tell you one more thing that I have certain plans for you. I want to also discuss certain plans that I have with you guys along with Rahul sir. I am planning that I will be taking previous year question discussion with you guys. I will also be planning to have some value added sessions, which includes certain quotations, examples, how you can use those examples for the in a very natural way. You don't have to throw examples. You don't have to, I would say, show off your knowledge of examples because nobody is concerned about that. You have to flow examples, use examples in a way that is substantiating your point. Then I will be also taking a particular revision kind of thing or crash course kind of thing for a particular chapter. I will be have plans ki I will discuss a chapter very briefly, let's say in 15 20 minutes, take the PYQs of those chapters and resolve your doubts. So this is I have planned. The more details of it will be finalized with Rahul sir. He will give it to you. And before that, I would ask you to ask me any questions or any sort of preparation or challenges you are facing with regarding to your preparation or with regarding to the session or not. Yeah, please go ahead. You can also unmute yourself and ask the question. Good evening, sir.
Good evening. Sir, my query is that for the theory portion, what happens with me is if I write something with my hand, I tend to remember it better. So what I do, I try to make simultaneous notes of every particular topic of the theory, specifically which I feel is important. But then the dilemma that I'm facing is मतलब वो टाइम बहुत ज्यादा मेरा लग जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है कि मेरी एफएम की थ्योरी 4 दिन में कंप्लीट हो जानी चाहिए, बट दैट टुक मी अराउंड अ वीक बिकॉज ऑफ दैट. सो इज इट द राइट अप्रोच गिवन द लिमिटेड टाइम? देखिए, आई वोंट tell you something that is it right or wrong, but I would say you very bluntly what is right or wrong. See, you have to, in this preparation journey, you need to be efficient. Point number one. And you clearly know this is not efficiency. You know the definition of efficiency, right? Input and output ratio is not something which is in proportion. Because there are institutes involved, there are people who have already made notes, so capitalize the knowledge of those. And if you want कि मेरे को अपना लिखा हुआ याद रहता है तो उसमें लिख लो, अंडरलाइन इट, मेक इट, मतलब उसमें थोड़ा स्पेस ले लो और उसके अंदर थोड़ा सा लिखो. अपना याद रहता है लिखा हुआ तो प्रैक्टिस कर लो आंसर. बट ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड हमारी कॉमर्स की लैंग्वेज में डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स. यू हैव टू अवॉइड. परफेक्शनिस्ट नहीं बनना है कि मेरे नोट्स बहुत परफेक्ट हैं. शॉर्टेस्ट बनना है कि मेरे नोट इतने शॉर्ट हो कि मैं 2 बार रिवाइज कर पाऊँ एग्जाम से पहले. एग्जाम से पहले का मतलब वो 5 दिन जो होते हैं जीएस और मेंस के ऑप्शनल के पेपर के बीच में, वहां पे फोकस कर. ये फोकस शुड नॉट बी कि मेरे नोट्स अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, सारा कॉम्प्रिहेंसिव कवर है, बट मैं रिवाइज ही नहीं कर पा रहा. क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है, 2-4 महीने बचे हैं आपके पास. अब 4 महीने में तो नोट्स बना लो. नोट्स बनाओगे तो पढ़ोगे कब? ठीक है. और एक आई वुड से कि यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस इट्स, नोट्स बनाने के बाद में फटीग होता है उसको पढ़ने का. मैं सेइंग राइट और रॉन्ग? यस सर, कि मतलब यस. नोट्स तो बहुत अच्छे से बन गए बट अब लगेगा कि ये तो बहुत अच्छे हैं, इसको पढ़ लेंगे आराम से. सो वी डोंट हैव टू गो इन दैट डायरेक्शन. जस्ट बी वेरी प्रैक्टिकल, बी वेरी pragmatic एंड बी वेरी एफिशिएंट व्हाइल प्रिपेयरिंग. तो जो नोट्स प्रोवाइड हो रहे हैं उनको वैल्यू ऐड कर लो, उसमें थोड़ा स्पेस देके ऊपर नीचे कुछ भी करके उसमें लिखो. ठीक है सर, ठीक थैंक है. यू. Yes, please, someone else Hello, sir. if you Good want to ask. evening. Yeah, please. With your UPSC journey, can you suggest which subject need to be prepared first in order to maintain consistency? Because sometimes it becomes bore. So, For commerce you are asking. yes, is commerce. See, if you have interest in numericals, prepare numericals first. Numericals of everything. I'm not suggesting to prepare paper 1. I'm saying पहले numerical पढ़ लो. Then prepare the theory of paper 1. Then prepare the theory of paper 2. That is a one simplified approach. But if you got bored in this, I would say have the diversification of subjects in your basket. अगर आप ऑप्शनल का ओटी पढ़ते हुए बोर हो रहे हो तो कोई बात नहीं, एफएम पढ़ लो थोड़े दिन बाद. एफएम पढ़ के बोर हो गए तो टेक्स्ट पढ़ लो. बट ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो. ये सब चीजें एक प्लान के अंडर होनी चाहिए. अगर आपको लगता है कि आप बोर्डम आ रहा है एक सब्जेक्ट पढ़ के, तो लेट से पहले ओटी पढ़ा एक हफ्ते, फिर एफएम पढ़ना है, फिर हमें टेक्स्ट पढ़ना है, फिर हमको ओबी पढ़ना है, फिर हमको वो पढ़ना है. ठीक है, ऐसे पढ़ सकते हो. या फिर एक काम करो, पहले ऑप्शनल का पेपर 2 पढ़ लो, जो कि एक बहुत आई वुड से कि एक सेट पैटर्न है उसका. क्योंकि उसमें समझने का है और लिखने का है और पढ़ने का है, प्रैक्टिस करने का वो नहीं है, मतलब न्यूमेरिकल टाइप नहीं है. तो आप ओटी पढ़ो. ओटी के बाद अगर ओबी का मन है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और पढ़ना है तो ओबी पढ़ो. नहीं है मन तो फिर आईआर जाने पढ़ो. ठीक है, Will it be इस right तरीके से रहेगा. approach? Because कभी कभी मतलब याद नहीं रहता है, मतलब अगर 2 हफ्ते पहले अगर रिवीजन मतलब जो भी नोट मेकिंग अगर पढ़ रहे हैं तो याद भी नहीं रहता है, तो फिर से दोबारा शुरू से पढ़ना पड़ता है कभी कभी. नहीं नहीं नहीं, आई वुड से कि आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए ना. आपने जी आज सर. ओटी पढ़ा, आपने हफ्ते 10 दिन में कंप्लीट कर लिया उसको, बट आप अगर उसको 2 महीने बाद पढ़ोगे तो आपको 10 दिन नहीं लगने चाहिए, आपको 2-4 दिन लगने चाहिए, क्योंकि आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे उस टाइम. तो वो तो टाइम लगेगा, बट ऐसा नहीं है कि यार आप पूरा सब्जेक्ट दोबारा से पढ़ने बैठ जाओगे. रिवाइज तो आपको करनी पड़ेंगी चीजें.
और वो भी आपका एक फ्रीक्वेंट रिवीजन का पैटर्न होता है कि आप हफ्ते भर में एक बार दोबारा पढ़ लो, महीने भर में एक बार दोबारा पढ़ लो। तो रिवीजन तो यू नीड ए कंसिस्टेंट अप्रोच, बिना रिवीजन के आप नहीं याद रख पाओगे, वो फैक्ट है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है। Good evening, sir. गुड इवनिंग। So, as you told right now that you should prepare short notes. So suppose I started with organization behavior recently. So if I take a chapter, say perception, then first thing I should do is to do PYQ analysis on that chapter, right? ठीक है। And thereafter, how should I proceed with short notes? Like after reading 3-4 pages, grasping it, and then making short notes of it, or should I go with the entire chapter and thereafter I should make a short note? See, it's very simple. Whenever you are writing the summary of a movie ना, तो आप ऐसे नहीं बताते इंटरवल तक ये हुआ है उसके बाद ये हुआ है ना। Yes, sir. मूवी की आप रिव्यू पढ़ते हो तो ऐसे नहीं पढ़ते, या किताब का रिव्यू पढ़ते हो तो ऐसे नहीं पढ़ा जाता है। पहले आप पूरा चैप्टर समझो, व्हाट इज परसेप्शन, व्हाट इज द मीनिंग, उसका पूरा डायमेंशन पढ़ लो पहले, है क्या परसेप्शन में। देन यू विल अंडरस्टैंड की आर यू गेटिंग इट। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, देन आप देखो परसेप्शन में व्हाट आर द टॉपिक्स कर दिया, मीनिंग ऑफ परसेप्शन, प्रोसेस ऑफ परसेप्शन, व्हाट आर द परसेप्शुअल एरर्स, परसेप्शुअल साइट्स क्या होता है, और दो चार और चीजें होंगी, हेलो इफेक्ट, स्टीरियोटाइप और की टफ चीजें। ठीक है। Yes, sir. फंक्शंस और प्रोसेस, ये सारे 5 टॉपिक्स एक बार ये पढ़ लिया, समझ लिया, क्लैरिटी आ गई, देन इट्स द टाइम टू मेक नोट्स। नोट्स का सबसे पहले नोट्स नहीं बनाने लग जाते हो आप पहले एक बार चैप्टर पढ़ो, समझ लो, उसके बाद एक बार और पढ़ने की जरूरत पड़े तब पढ़ लो, फिर नोट्स बनाओ। फिर आपके नोट छोटे होंगे। अगर आप बीच में जल्दीबाजी में नोट बना लोगे तो नोट बहुत बड़े हो जाएंगे, लेंथी हो जाएंगे। Yes, sir. समझिए आप बात। Yes, sir. ठीक है। Thank you, sir. एंड आई वुड से कि छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं, मतलब फॉर एवरी चैप्टर यू शुड नॉट हैव मोर देन 1 पेज नोट, एक्सेप्ट मोटिवेशन और लीडरशिप, वो थोड़ा उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उसकी बात अलग है। बाकी चैप्टर्स में एक एक दो दो पेज के नोट्स बहुत है। Okay, sir. Thank you so much, sir. ठीक है। Yes, please, anyone else, if someone wants to ask, or even if you're not comfortable asking it now, you can message Rahul sir, or you can message Rahul sir. I will connect with you guys, or I will address your doubts now. Fine. So I think I have made my point clear. Is आप लोगों को चीजें समझ में आई ना, what I'm trying to convey in this session? Is it fine, right? Sir, I think what you've suggested with respect to practicing PYQs and those 15-minute session, that will be really helpful. So those details will be communicated to us by Rahul, sir, right? Yes. Yes. So Rahul here. Actually, जो ये हम प्रोग्राम स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेस बना करके, स्पेशली लास्ट 5 to 6 ईयर के क्वेश्चंस को बेस बना करके उनका हम आंसर डिस्कस करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। तो इस तरह से हम प्लान कर रहे हैं। और इसके अलावा आपकी कुछ और भी अगर आपको सजेशन है तो आप इंक्लूड कर सकते हैं, बिकॉज एक्चुअली द पॉइंट इज दैट शिवांग इज अवेलेबल फॉर नेक्स्ट आई थिंक 1.5 month Yes. before he joins the training. So it's a good opportunity. मतलब ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलनी मुश्किल होती है जिसमें हम लोग, एक तो he has already come from the mains 24 directly, तो एक रिसेंट एक्सपीरियंस है, सारी चीजें टिप्स पे होती हैं, है ना। और देन ही इज रेडी टू पुट हिज टाइम विद यू पीपल। तो बेसिकली मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी, उस रिक्वेस्ट पे इन्होंने अपने लिए, आपके लिए टाइम निकाला है। और इसकी जो फर्दर डिटेल्स हैं वो हम जल्दी पब्लिश करेंगे स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, कोशिश मैं करूँगा कल तक उसको मैं करूँ। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जितने लोग मैक्सिमम इस पर पार्टिसिपेट करेंगे उतना अच्छा रहेगा। इसके हम कुछ चार्जेस भी थोड़े लगाएंगे, फाइनेंशियल चार्जेस, जिससे कि आपका भी थोड़ा कमिटमेंट रहेगा और हमारे लिए भी थोड़ा कॉस्ट पे करना आसान रहेगा। और इसके अलावा पर्पस है कि रियली जो मेंस 25 में आपका कॉमर्स ऑप्शनल हो वो अच्छे से हो। और यही एक्चुअली बहुत अच्छा टाइम है, ये बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि अभी फेस्टिवल टाइम खत्म होने वाला है, तो योर हॉलीडे इज ओवर, मेंस 24 इज ऑलरेडी ओवर। तो
25 वालों का टाइम स्टार्ट होने वाला है, तो एक इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती आपके लिए, ठीक है? Sir, just with respect to structure जो आप बोल रहे थे, तो every topic wise, I think what sir mentioned, Shivang sir mentioned, we can go with, say, example, diagram, quotation, one case study, one or two definitions, and then current affairs. If that format we can follow, so then it will be a ready-made thing for us to just refer it at the time of यस exam. यस यस, देखिए जो भी एग्जाम ओरिएंटेड होगा, अप्रोच होगा ना, जो बेसिकली एक चीज होती है आइडियलिस्टिक, एक होता है फिजिबल। तो बेसिकली जो फिजिबल होगा वो किया जाएगा, तो आपके लिए भी फिजिबल हो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में कोटेशन आप यूज नहीं कर सकते, हर एक क्वेश्चन में एग्जांपल नहीं हो सकते, तो जो भी मोस्ट फिजिबल होगा प्रैक्टिकल वे में, है ना, इसलिए आपको इन्वॉल्व करके आप ब्रेनस्टॉर्मिंग साथ में कर रहे होंगे, आपको कुछ टारगेट दिया जाएगा, वो टारगेट आप करके आएंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और साथ में फिर आपको इनपुट्स मिलेंगे। तो इस तरह से क्या होगा ना, इट विल बी ए काइंड ऑफ कोलैबोरेटिव एफर्ट। यहाँ पर कोई इस तरह का टीचिंग नहीं होगा, और ना ही है कि आपको पूरा छोड़ दिया जाएगा, आप जब टेस्ट लिखेंगे तब आपको वो होगा। तो यहाँ पर एक कोलैबोरेटिव एफर्ट हम इस तरह का प्लान कर रहे हैं, जिससे कि आपको डायरेक्टली लर्निंग हो आपके लिए, है ना, इट्स ए प्रोसेस ऑफ लर्निंग rather than And testing of one more thing, someone has asked me how to generate points in paper. So वो जो चीजें हैं वो भी I think वो resolve हो जाएंगी उस सेशन से. yes yes okay. So let's thank you Mr. Shivang, thank you Shivang for Sir, sharing strategy, and yes, so Sumit, you have some questions? sir, will it be available for all students? देखिए ये सभी के लिए अवेलेबल होगा ऑब्वियसली, बट ये जो प्राइसिंग मैकेनिज्म है ये हमें फिगर आउट करनी होगी। जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं डेफिनेटली उनके लिए हम कुछ इजी रखेंगे, है ना, और जो भी मतलब बेस्ट पॉसिबल होगा। देखिए आप समझते हैं कि जो भी चीजें हैं वो थोड़ा एक मतलब कमिटमेंट के साथ में तभी की जा सकती हैं जब बेसिकली पूरा प्रोसेस को स्ट्रक्चर्ड वे में रखा जाए, है ना। अगर हम लोग फ्री प्रोग्राम चलाते हैं तो क्या होता है ना, आफ्टर 5-6 सेशन हमें भी नहीं लगता कि हमने कोई कमिटमेंट दिया है। देखो इस बात को प्रैक्टिकली समझिएगा, हम कहें कि हमको फ्री सेशन करेंगे, है ना, तो एक्चुअली कमिटमेंट तब आती है जब हमने आपको प्रॉमिस किया हुआ है और हमने आपसे कुछ कमिटमेंट मांगी हुई है, आपने हमें कुछ हम एक एग्रीमेंट के अंदर में, है ना। तो अदरवाइज क्या होता है कि जो स्टूडेंट फ्री प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं ना तो उनके अंदर कमिटमेंट होती है और ना तो डिलीवर करने के वाले के अंदर कमिटमेंट होती है। यहाँ पे प्रैक्टिकल बात करने वाली बात है ना, क्योंकि स्ट्रेटजी वाली सेशंस तो ऑलरेडी बहुत पड़े हुए हैं। अगर आप स्ट्रेटजी की बात करोगे तो स्ट्रेटजी जो है वो शिवांग और आपके साथ शेयर कर देंगे। तो स्ट्रेटजी वाली बात अलग होती है, और दूसरी होती है कि कंधे से कंधा मिला के काम करना। तो जो कंधे से कंधा मिला के काम करने वाला काम है वो हम यहाँ पे करना चाहते हैं, ठीक है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। और डेफिनेटली सबका इसमें जो है हम लोग जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उसका हम ध्यान रखेंगे, वी विल टेक केयर ऑफ दैट, ओके। Okay, sir. Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू। सो So thank you very much, guys. So I hope you have a good session. You have learned something new. We'll see you in the next upcoming sessions. yeah, thank you Shivang, and thank you everyone. Good night, have a good day. Thank you, sir.